Welcome everyone. I hope my voice is audible. This is Rashti and I am part of the um, I'm so sorry. Apologies. This is Rashti and I am part of the business partnership team at Dhan. Thank you for taking out your time and joining us for today's webinar. We'll wait for another 2-3 minutes for everyone to join in. Okay, so let's get started. Welcome to today's webinar on the basics of quantitative analysis in investing by Sonam Srivastava. So just a little housekeeping before we get started. If you have any questions during the session, please type them into the question box. I'll bring them up during the end of the session. I'll just give you a brief about Sonam Srivastava. Sonam, Sonam Srivastava is the founder of Right Research, an India-based robo-advisor where she creates data-driven portfolios out of her deep passion for quant finance. Right Research is a wealth creator in the digital space that uses scientific data-driven methods to to tactically extract opportunities across assets in the public markets to grow clients' wealth. Over to you, Sonam ma'am. You could start your video and the audio.
Hey Drashti, you need to, allow for me to, enable the video. I think it's not getting, Yes. yeah, yeah. So hello everyone. Thanks a lot for joining me in this session. And, today we are going to talk about quantitative investing, which is the type of investing that we do at Right Research. And now that, we are uh, going live on the Dhan platform as a paid small case, it would be very interesting for us to, look at the methodology that we follow and for you guys to explore some of the portfolios that we have. So let me start off with the presentation, and towards the end of the presentation, Drashti will bring up the questions that we can take, you know, in this session. So I'll start with a little introduction. Right Research is a advisor in the Indian market, but we don't I don't recommend you stocks based on simple manual analysis. We employ data driven algorithms for all our recommendations, and we have been doing this as Right Research for the last 3.5 years. And in these last 3.5 years we have seen these portfolios do really well. We believe that because India is a country which has a lot of opportunities and a lot of things change every day, it is perfect for us to practice quantitative investing. So I'll try to introduce to you what this topic is in this session. So I think that she told you about it, that Right Research, the new age investment manager, and we're committed to help people invest better. We are among the top advisors on small case. We started along with small case on around 3.5 years, and we follow a quantitative philosophy. And we have a deep belief in these quantitative methods, and that is what has happened in the last 3.5 years. That we believe that these methods can deliver excellent performance, and they've done increasingly well, delivering 150% returns in the last 3 years, which is way above what the index has given. We have very affordable, transparent, and accessible platform. Along with small case, we try to make investing easy for everyone. I'll give you a little bit of background about me. Why am I talking about quant investing? So I've been in this field of quant investing for more than 10 years. I started in 2012 with a company called Forefront Capital Management that was sort of acquired by Edelweiss. And I've worked at Edelweiss for close to 4 years in the algorithmic trading group, creating high frequency algorithms. Then I worked at HSBC in the European market, working on high and medium frequency algorithms, trying to forecast how the trades are going. And then I worked in a US based advisor called QPlum, where I've again applied this in the US market. And then I started Right Research right here in India, because I think that I'm really deeply passionate about this type of methods. And I think Indians don't have an option where they can, follow a quant advisor or they can look at quant investing. That is what I wanted to do and bring it out as Right Research. Now, quant investing, what is quant investing, right? Quant investing essentially is like any other type of investing. Any investor in the market, what they're trying to do is they're trying to maximize the returns on investment, and they're trying to minimize the risk that they might see in their portfolio, right? So anybody in the market, whatever method they have, whatever philosophy they follow, whatever their technique is, using that is trying to just get a better return and do that at a lower risk. uh, so a typical analyst or a typical investor in the market, what they do is they look at the a particular stock, they might study their financials, they might study their technical, their charts, they might go look at what the news is saying, they might go to Twitter and follow a few things, right, to form what is the expectation about this stock. And then, which stock gives them the highest expectation, they invest into it. A quant investor, what they do is they don't do it in a manual fashion. What they do is they use data-driven algorithms to do all this, right? So they would feed this data into a computer program that tries to form an expectation and gives a rating to a particular stock. So doing this, we
we are adding a lot to the investor, right? We are uh, reducing the bias that an investor could have. I might be biased about a particular stock, so even though I can see that certain things have changed, I am not ready to buy it or sell it, whereas an algorithm does not have that bias. Also, a quant algorithm can look at a lot of data, right? So analyst might be limited to this is a set of 50 companies that I cover and I won't go beyond it. But a quant advisor can apply the same algorithm for any number of stocks and try to work with that. Similarly, I am not a typical investor is limited has a certain philosophy he follows, right? The typical investor might say that I will only look at fundamentals and pick value stocks, or I will only look at high quality stocks. That is my philosophy. A quant researcher does not have to have that bias. You can look at a number of things in the market and invest based on that. Somebody is saying that I should talk in Hindi. I'll try to add Hindi to this session. तो क्वांट इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ एक स्टॉक पे फोकस नहीं करना. आप जितने स्टॉक पे अपनी एनालिसिस रन करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि क्वांट में हम किसी भी स्टॉक के एनालिसिस डेटा के थ्रू करते हैं. हमने कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया है जिसपे हम डेटा फीड करते हैं तरह तरह का, चाहे वो फंडामेंटल डेटा हो, चाहे वो चार्ट्स का डेटा हो, चाहे वो न्यूज का डेटा हो, और उसके थ्रू हम आगे क्या करना है उससे हम डिसीजन लेते हैं, जिससे ह्यूमन बायस खत्म होती है, आपकी यूनिवर्स बढ़ जाती है, प्लस हम मार्केट में तरह तरह के फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, जो एक मैनुअल इन्वेस्टर के लिए करना मुश्किल होता है. तो क्वांट इन्वेस्टिंग के कई फायदे हैं. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्वांट इन्वेस्टिंग का मतलब है एल्गो ट्रेडिंग, राइट? मतलब कि इंट्राडे इन्वेस्टिंग इज क्वांट इन्वेस्टिंग, राइट? कि मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो चलेगा जो मार्केट में फायदा बनाएगा. लोगों को लगता है वो ही क्वांट इन्वेस्टिंग होती है, बट ऑब्वियसली वो क्वांट इन्वेस्टिंग होती है. बट उसके अलावा क्वांट इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें आप चाहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप हर कुछ घंटे पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डेली फ्रीक्वेंसी पे या वीकली फ्रीक्वेंसी पे या मंथली फ्रीक्वेंसी पे भी आप अगर ट्रेडिंग करें उसको भी हम क्वांट इन्वेस्टिंग ही बोलते हैं. तो जो क्वांट इन्वेस्टिंग राइट रिसर्च करती है वो थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है. ये थोड़ी हम जो रिबैलेंसिंग है पोर्टफोलियो में जो चेंजेस होते हैं हम हर कुछ वीक्स पे करते हैं, हर या फिर मंथली बेसिस पे करते हैं. तो ये एक इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी है. अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करेंगे तो आपको ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ती है. उसको रिड्यूस करने के लिए हम इन पोर्टफोलियोज को बहुत ज्यादा रिबैलेंस नहीं करते. अब राइट रिसर्च में हमारी कुछ की फिलॉसफी है जिससे हम ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये थोड़ा बहुत उन फिलॉसफी को हाईलाइट करता है. तो सबसे पहली फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग. फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट को अगर आप समझना चाहें, आपको मार्केट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? मार्केट को किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस को आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? अगर आप कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, आप अमेजोन में शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आप कुछ पैरामीटर से किसी भी चीज को जज करते हो. उसकी रेटिंग कितनी है, अगर उसकी क्वालिटी कितनी है, उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है. एक स्टॉक को कैसे आप इवेल्युएट करेंगे? तो उसको इवेल्युएट करने के लिए जो फैक्टर्स जाते हैं उसको हम फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. तो हमारा कोशिश होती है हमारी राइट रिसर्च में कि हम किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या फैक्टर्स यूज होते हैं मार्केट में वो आइडेंटिफाई करें, और हम उस पर बहुत गहरी रिसर्च करते हैं. दूसरी बात हुई रेजीम मॉडलिंग. रेजीम मॉडलिंग का मतलब होता है कि तो फैक्टर इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का क्वांट इन्वेस्टिंग की फील्ड में, जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी. उसके अलावा रेजीम मॉडलिंग का मतलब है जो मार्केट होता है एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और डायनेमिक चीज होती है मार्केट, राइट? मार्केट में आपको दिख रहा है कि अरे एक टाइम पे आपको दिखता है कि भाई हाई मोमेंटम स्टॉक जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें ट्रेंड आ गया है. लेकिन बहुत ही जल्द किसी भी एक दिन आपको दिखता है कि अचानक से सब कुछ बदल गया, और अचानक से वैल्यू स्टॉक बेटर करने लगे हाई मोमेंटम स्टॉक से, है ना? एक दिन आईपीओ बहुत ज्यादा चल रहे थे, अगले दिन सारे आईपीओ फेल होने लग गए. तो
मार्केट है वो अलग अलग फेजेस में जाता है। एक फेज को हम बुल मार्केट कहते हैं, जो हमने 2020 और 21 में देखा था। और उसके बाद का जो फेज है उसको हम, जैसे अभी हम जो देख रहे हैं, ये बियर मार्केट होगा या साइडवे मार्केट होगा। तो ऑब्वियसली जो आपने बुल मार्केट में किया है वो आप बियर मार्केट में नहीं करके फायदा बना सकते। अगर आप एक बियर मार्केट में सिर्फ जो भी स्टॉक बढ़ जाए उस पर इन्वेस्ट करने लगेंगे, आपको देखा कि उसमें तुरंत करेक्शन आ जाता है। तो हमेशा ये समझना जरूरी है कि मार्केट किस फेज में जा रहा है, और इसको समझने की जो कोशिश होती है उसको हम रेजीम मॉडलिंग कहते हैं। तो ये दो बहुत ही कोर फिलोसफी है जो हम राइट रिसर्च में फॉलो करते हैं। इसके अलावा मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक चीज है जो हमारा एक बहुत पॉपुलर स्मॉल केस है, राइट मोमेंटम करके। उसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं। मतलब मार्केट में जिस स्टॉक ने अच्छा बेहतर फायदा दिया है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, और इसके बारे में आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा रिस्क मॉडलिंग, कोई कभी जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो सिर्फ रिटर्न नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मार्केट में अलग अलग फेजेस होते हैं। एक फेज में बिल्कुल रिस्क नहीं दिखेगा, बुल मार्केट चल रहा है, बट एक फेज में आपको दिखेगा कि मार्केट में रिस्क आ चुका है। तो रिस्क पे हमेशा ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप बुल मार्केट में जितना रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं, बट आप बेयर मार्केट में आपको अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कम करना पड़ेगा। तो रिस्क मॉडलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वांट इन्वेस्टिंग का, जिसको इंक्लूड करके आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को काफी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा असेट एलोकेशन एक पार्ट है जो एक बहुत अच्छा टूल होता है रिस्क रिड्यूस करने का, है ना। जैसे ही आपने देखा मार्केट में रिस्क बढ़ गया है तो सिर्फ आप, तो बहुत लोगों ने मार्केट से पैसा निकाल के थोड़ा गोल्ड में डाल दिया या थोड़ा बॉन्ड्स में डाल दिया, इसको हम असेट एलोकेशन करते कहते हैं। और ये टेक्निक्स भी हमारे पोर्टफोलियोज में यूज होती हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारा बहुत फोकस रहता है राइट रिसर्च में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज है जिसके बारे में हम आजकल बहुत सुन रहे हैं मार्केट में, बहुत सुन रहे हैं जनरल सोशल मीडिया या जनरल न्यूज मीडिया में, क्योंकि चैट जीपीटी के जो फायदे लोगों ने देखे हैं तो सबका इंटरेस्ट एआई में बढ़ गया है। एआई मार्केट में आप कैसे यूज करें, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। So now I'll switch to English because the language is saying that you should switch to English, uh, uh, and I'll keep on switching. So artificial intelligence methods are also used in investing a lot because there are various ways in which you can improve your investing journey with AI, and that is what we also like to do in right research. So I will cover how we are using all of these methods and how they can improve the performance, why we have a lot of conviction in these methods. So I will try to go through this in the session. So first thing is factor investing, right? मैंने आपको बोला कि कोई भी पोर्टफोलियो को हम ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट में। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि पहले इनिशियली वी यूज्ड टू थिंक कि अगर आप 10-15 साल पहले या मार्केट में कई सालों पहले लोग सोचते थे कि भाई रिटर्न आ रहा है मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर ने कुछ कर दिया है, राइट? लाइक एनी फंड्स परफॉर्मेंस इज बिकॉज ऑफ their manager. That's what people used to think. But now, all of us understand then, however good the manager is, the market direction will always have an impact on the portfolio return. चाहे पोर्टफोलियो में चाहे पोर्टफोलियो मैनेजर कितना भी अच्छा हो, मार्केट की परफॉर्मेंस उस पर इफेक्ट ही करती है, राइट? तो किसी भी पोर्टफोलियो को आप ब्रेक कर सकते हैं। कुछ पार्ट जो मार्केट से एक्सप्लेन होता है और कुछ पार्ट जो मार्केट से एक्सप्लेन नहीं होता है। Some part of it is explained by market, some part of it is not explained by market. Now, the part that is explained by the market is something that we call beta of the portfolio. But the part that is not explained by the market is something that we call alpha. So what all investors are trying to do is, market का impact तो होना ही है, तो वो तो beta component हो गया, जो market से आगे से अलग है, जो component हमारे portfolio को, उसको हम alpha बोलते हैं। और अल्फा को भी अब इतनी रिसर्च कर ली है लोगों ने कि उसको भी लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो अगर आप मार्केट को फॉलो करते हैं, अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं, अगर आप मनी कंट्रोल देखते हैं, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स सुनते हैं, तो एवरी टाइम सम इन्वेस्टर कम्स, दे से this stock is doing well because it is undervalued, or this stock is doing well because it has high growth, or maybe this stock is doing because they have very good quality of earnings,
or somebody might come and say कि this stock has a very high momentum. So these are the concepts we all understand, right? कि किसी भी स्टॉक को अंडर वैल्यूड हो या हाई ग्रोथ हो या क्वालिटी हो या मोमेंटम हो, उसमें एक रिटर्न उसकी बढ़ जाती है या उसमें एक एज होता है इन सब चीजों से. फैक्टर इन्वेस्टिंग भी यही करता है कि जो अल्फा मिल रहा है आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा कर रहा है क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है, तो इसको इसने न्यूमेरिकली डिफाइन कर दिया वैल्यू क्या होता है और उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया. सिमिलरली क्वालिटी को भी हमने न्यूमेरिकल डिफाइन करके एक्सट्रैक्ट कर लिया. सो नाउ वी कैन एक्सप्लेन एनी स्टॉक रिटर्न बेस्ड ऑन दीज एक्सप्लेनेबल फैक्टर्स, राइट? So now, our understanding of the market has evolved, and we can understand ki, okay, in today's market, value is doing well, so I need to pick stocks that have high value. Or maybe, market switches and suddenly momentum is doing well, so I need to pick up stocks that have a higher momentum component, right? So this is what a factor investing methodology does. And, all of these factors you can define numerically and work with it. So that's what we try to do, and I try to explain this a little bit more simply going forward. So before we go into an explanation on how the portfolio is constructed, let's try to understand the factors, like I said, right? These are very important things because any investor that you talk to will be talking about one or the other of the factors, right? Some investor who is a big believer in momentum investing, they will explain to you this factor, whereas some other investor who is a big believer in value will talk about the value investing factor. But if you want to understand the market as a whole, if you want to get a holistic picture of the market, you have to understand कि मार्केट आपका बहुत सारे फैक्टर से डिफाइन होता है. उसको डिफाइन करने के लिए आपको अलग अलग फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं ये काफी पॉपुलर हैं, इसीलिए इनको इंपॉर्टेंस मिली है. ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये आपको एक एज देते हैं इन्वेस्टिंग में. अगर आप इनमें से कोई भी फैक्टर फॉलो करोगे, आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में आपने मार्केट से बेहतर रिटर्न कमाई है. So that's why we follow all these factors, because they give you a higher return than the market in the long term. Now let me explain to you each of these factors now. So the first factor, that is here is something called low volatility. What low volatility means is that any stock that is showing lower volatility than the market will do better in the long run. जिस भी स्टॉक में कम वॉलेटिलिटी है वो अच्छा परफॉर्म करेगा. और ये एक फैक्टर होता है. और वॉलेटिलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वॉलेटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जो मार्केट की जो अप एंड डाउन मूव है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उससे आप डिफाइन कर सकते हैं. Second is dividend yield, right? So any stock that gives very good dividend consistently will be outperforming the market in the long term, right? That is, something that you are seeing right now. Any stock that has given high dividend is seeked out by investors because the market is not giving that much return. But, dividend is a set, earning that you keep on getting from that stock, right? Prices might go up and down, but dividend is something that will come to your bank, right? So that's why dividend investing is also a very important factor that you can look at. Third interesting factor is the quality factor. Quality means that any stock that has a very good quality, right? So so a lot of investors in India, बहुत सारे investors आपको इंडिया में आके बताते हैं कि भाई हम तो ऐसे स्टॉक पिक करते हैं जो कंसिस्टेंटली आपके कंपाउंड करते रहेंगे, ऐसे स्टॉक पिक करते हैं जो आप खरीद के छोड़ सकते हो, जिसको लोग कॉफी कैन अप्रोच बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि आप एक कोई बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक ढूंढोगे जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी मिल रही है, रिटर्न ऑन एसेट बहुत अच्छा मिल रहा है, उसकी अर्निंग कंसिस्टेंट रहती है, बहुत वेरिएबिलिटी नहीं होती है, वो बहुत कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होता है. मतलब ये एक बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक है और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं. सो क्वालिटी इन्वेस्टिंग इज अनदर philosophy that you can follow, and this all can be defined using numbers, right? You like your return on equity, your profitability, your variability in earnings are all numbers that you can use to define these. Next is momentum, which is again a very, very important factor in the India market. India is an emerging country. India has gone through some very spectacular bull phases, right? So whenever you enter a bull phase, you will see that high momentum stocks start to outperform the market, right? Like you will see that any stock that has picked up momentum is doing much better than the overall market.
मोमेंटम इन्वेस्टिंग टेंड्स टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल फैक्टर इन इंडिया। इंडिया में मोमेंटम इन्वेस्टिंग की ग्रोथ बहुत पावरफुली हुई है और लॉन्ग टर्म में उसने काफी बेनिफिट दिए हैं। उसके अलावा वैल्यू फैक्टर है, जो आज के टाइम पे हर कोई वैल्यूएशन की बात कर रहा है। मार्केट में लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो कम हो रहा है, इसलिए लोग किसी भी स्टॉक के लिए ज्यादा पैसा पे नहीं करना चाहते हैं। जो भी स्टॉक अपनी अंडरलाइंग वैल्यू से बहुत महंगा है, लोग कहते हैं भाई उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, ये बहुत ओवर वैल्यूड है। बल्कि कोई भी स्टॉक जो काफी अच्छा दिख रहा है बट उसकी वो अपने उसका प्राइस उसकी वैल्यू के कंपैरिजन में कम है, तो लोग कहते हैं भाई ये अंडर वैल्यूड है, इसमें इन्वेस्ट करो, और उसमें उनको मुनाफा मिलता है। The value investing is picking up stocks that have lower value than their underlying price, and people invest into these stocks to get a better return out of them. Then there is size factor. Size means कि any stock that is smaller in size tends to outperform in the long term. जो भी stock आपका मार्केट कैप में छोटा है, जैसे स्मॉल कैप हो गए या मिड कैप हो गए, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उसमें ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि अगर किसी स्मॉल कैप में बहुत सारे बायर्स आ गए तो उसकी आप देखोगे, क्योंकि उसका प्राइस ही इतना कम है कि उसमें काफी तेजी आ जाएगी, राइट? क्योंकि उसका मार्केट कैप ही इतना कम है कि जब उसमें बहुत सारे बायर्स आते हैं तो उसकी ग्रोथ काफी तेजी से होती है। इसके अलावा ग्रोथ ग्रोथ इज अ फैक्टर वेयर वी आर जस्ट पिकिंग स्टॉक दैट आर गिविंग good earning growth, right? So any stock that is showing a good earning growth, we are investing into it. And then there is liquidity, which means that any stock that has high liquidity is preferable. तो अगर आप यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे लॉन्ग टर्म में, आपको दिखेगा इंडिया में मोमेंटम एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर है। और इसको समझना भी काफी आसान है, क्योंकि मोमेंटम क्योंकि भारत में हमने देखा है एक 2000 आपने 14 में देखा है, 2020 में देखा है, उसके पहले 2003 से 7 में हमने देखा है कि मार्केट एक बुल फेज के थ्रू गया था, मतलब कि बहुत तेजी आई थी मार्केट में। जब मार्केट में तेजी होती है तो जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट से भी काफी तेजी से बढ़ते हैं और उससे आप काफी मुनाफा बना सकते हो। मोमेंटम लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी होती है। उसके अलावा क्वालिटी है, जो मतलब क्वालिटी ऑफ अर्निंग, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है इंडिया में, जिसने काफी अच्छी यहाँ पे मुनाफा दिया है। उसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो हर फैक्टर ने आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न दिए हैं। और इन फैक्टर्स का फायदा क्या होता है कि बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस क्वांटिटेटिवली, वी आर फॉलोइंग दिस थ्रू नंबर्स, यू विल सी दैट we are capturing fundamental opportunities in the market, we are capturing behavioral opportunities in the market, right? Momentum is nothing but capturing investor behavior. We are doing this, we are capturing all performance drivers, right? Whatever defines the market, we are trying to capture it. And we are looking these factors in a top down fashion. What that means is I'm looking at momentum and then I'm going down to stocks. So that gives you an opportunity to be very well diversified. अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो फैक्टर्स हम ढूंढते ही इसलिए हैं ताकि वो मार्केट से बेहतर रिटर्न दें। तो आप अगर फैक्टर्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न मिलते हैं। उसके अलावा आप अगर डाइवर्सिफाई करते हो इन फैक्टर्स में, तो आपका ड्रॉडाउन भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हर फैक्टर साथ साथ नहीं चलता। जब मोमेंटम बढ़ रहा होता है तो वैल्यू नीचे होता है, जब वैल्यू बढ़ रहा होता है मोमेंटम नीचे होता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको एक ज्यादा कम ड्रॉडाउन देगा, क्योंकि आपने डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा लिया है। तो ये होता है फैक्टर इन्वेस्टिंग। इसके बाद मैं आपको अब मैं क्या करूंगी, मैंने आपको थोड़ी ब्रीफ नॉलेज दे दी है। इसके बाद मैं आपको अपने पोर्टफोलियोज के बारे में थोड़ा बताऊंगी। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं रेजीम मॉडलिंग, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कि जैसे हमने बोला कि मार्केट अलग अलग फेजेस में जाता है, बट आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछो कि भाई कल क्या फेज होगा या अगले महीने क्या फेज होगा मार्केट का, वो बताना आसान नहीं होता। तो उसको फोरकास्ट करने के लिए हम एक एआई ड्रिवन रेजीम मॉडल यूज करते हैं। इस मॉडल में हम उसको मार्केट की परफॉर्मेंस, मार्केट की वॉलेटिलिटी और मार्केट के रिलेटेड जितने भी हमारे डेटा पॉइंट है वो फीड करते हैं। उसके साथ हम मैक्रो इकोनॉमिक, जैसे जीडीपी डेटा हो गया, इन्फ्लेशन डेटा हो गया, तरह तरह का डेटा उस मॉडल में फीड करते हैं। और उससे हम कहते हैं अब आप प्रिडिक्ट करो कि अगले महीने क्या रिस्क रहेगा मार्केट में। और
मार्केट में रिस्क प्रिडिक्ट करना आसान होता है रिटर्न प्रिडिक्ट करने से, क्योंकि रिटर्न बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, रिस्क इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, हाई रिस्क हाई ही रहता है कुछ टाइम तक, लो रिस्क लो ही रहता है कुछ टाइम तक, तो उसको प्रिडिक्ट करना आसान होता है। तो हम एक एआई ड्रिवन मॉडल यूज करते हैं जो मार्केट में रिस्क प्रिडिक्ट करता है, और जब हम देखते हैं मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, अपने मॉडल्स को बोलते हैं भाई तुम रिस्क लेना कम कर दो, है ना, हमने ऐसा मॉडल बनाया उसको हम बोलते हैं भाई तुम मार्केट में रिस्क लेना कम कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली रिस्क रिड्यूस कर देता है। जब भी हम देखते हैं भाई मार्केट में रिस्क घट गया है, आप बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप जितना रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, तो ऐसे सिनेरियो में अपने हम पोर्टफोलियोज का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो ये एक रजीम मॉडल था, यहाँ पे हम एआई टेक्निक्स भी यूज करते हैं, और ये भी एक हमारा जो इन्वेस्टर बिहेवियर है, राइट, कि आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, द मार्केट विल नॉट रिमेन द सेम, द मार्केट विल shift from a bear market to bull market. That plays an important role, and that is what we use in the regime modeling framework. Now I'll go through some of our popular portfolios where you will see how things that we have talked about are employed in these portfolios. The first portfolio that we started Right Research with was our multi-factor portfolio. This is, on Dhan small case as balanced multi-factor, या फिर balanced, right, balanced, right? Here, what we are trying to do is, like I said, portfolio is broken down into a number of components. We are explaining any stock using these numbers, right? Any stocks we can look and say, okay, these are 10 numbers that define this stock. And then we are forecasting the market, right? Market is saying, okay, the market is high risk or low risk. If the market is high risk, then I can invest into factors that have low risk. When the market is volatile, then I'll stick to factors that have low volatility. So I will prioritize value, maybe volatility, and factors that are much more stable. Similarly, when the market is low, there are low risk, then I'll go to momentum, alpha, and all these factors. Along with it, we also include ETFs. हमारे इस पोर्टफोलियो में ETFs भी होते हैं, जैसे गोल्ड ETF है, बॉन्ड ETF है, और आप अगर इस पोर्टफोलियो में सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस टाइम पे जो बॉन्ड और गोल्ड ETF है उनको ज्यादा वेटेज दी हुई है इस पोर्टफोलियो में, मतलब इनको उसमें वेटेज है इन ETFs की, क्योंकि मार्केट में रिस्क बढ़ चुका है। तो इस टाइम पे हमें थोड़ा डीएलोकेट करके गोल्ड और बॉन्ड भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में इसने मार्केट से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर आप इसको 10 साल के होराइजन में देखेंगे तो इसने आपको कुछ 24-25% का CAGR दिया है। 24-25% का CAGR अगर आपको मिल जाए तो ये आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए, जो वॉलेटिलिटी है और जो बुल मार्केट है, दोनों एक पार्ट एंड पार्सल होते हैं। कभी कभी आपको मार्केट में बहुत ज्यादा ये भी पेन भी होता है, जिस 2020 में आपने देखा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आई थी, बट फिर वहीं दूसरे टाइम पे इसमें आपको मुनाफा भी दिखता है। Combining all these opportunities, this portfolio, because it is following that methodology, can give you up to 24-25% CAGR based on historical data across 10 years. This one has been running live for the last 3.5 years, and it's actually given some 25% CAGR. And because we have included ETFs, हमने बॉन्ड और गोल्ड ETF भी इंक्लूड किए हैं, उसकी वजह से इसका रिस्क भी बहुत कम होता है। तो अगर आप इस पोर्टफोलियो को देखोगे तो इसकी वॉलेटिलिटी मार्केट से कम है, प्लस जो ड्रॉडाउन है, विच मीन्स कि when in 2020 market crashed almost, a multi-cap portfolio crashed almost 40%. At that point in time, this portfolio only went down almost 15-20% because we deallocated and we managed the risk very well. So it has a two-sided benefit. One is that it is reducing the risk in extreme market events, plus it is giving you a good performance in the bull market. So it is combining the benefit of both of these cases, and that's why it can give you a good performance in the long term. So if you are a balanced investor, if you don't want to take, if you're not a high risk investor, then it's a very perfect portfolio for you. You can make this the core of your portfolio. Now, the second portfolio that we have, which is actually the most popular portfolio among our audience on small case, is the momentum portfolio. Momentum is a very very interesting concept. Momentum means कि momentum को आप define कैसे करेंगे? कोई भी आता है, कोई भी आपसे इन्वेस्टर बात करता है, कोई भी फंड मैनेजर आपसे बात करता है, वो हमेशा
कंपनी की अर्निंग के बारे में बात करता है, वो कंपनी के नंबर्स के बारे में बात करता है, कंपनी के बारे में जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में बात करता है। बट ये जो पोर्टफोलियो वो ये कहता है कि भाई हम तो ट्रेंड फॉलो करेंगे, दैट्स इट, वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड, वी आर नॉट लुकिंग एट द फंडामेंटल नंबर्स. So that makes it difficult to understand. Why should we do that? Why should we not, actually follow whatever the fundamentals are telling us? Now, the explanation for that is that, markets actually do not follow, uh, the value trend. What happens is that sometimes, maybe an earning comes and we can see that, this stock has given good earning, these numbers look good. But not all investors will, start buying that stock immediately. Until unless investors form a consensus and then they say, oh, now we have found out that, that, when there's a consensus and a lot of people are buying it, right? When there are sufficient number of buyers, only then, the stock price appreciates. Stock prices are defined by supply and demand, right? So until unless there are a lot of buyers, the price will not move, right? So what this portfolio tries to do is it tries to capture these trends, right? It tries to find out which stock actually has picked up trend, and then it tries to invest once the trend has formed and exit when the trend has been broken. And this is, and investor behavior is something that this portfolio tries to follow and does it in a very well diversified and low risk fashion. So this one we rebalance on a monthly basis. It will have 20 to 30 stocks. You will have top 500 stocks in this portfolio. No sector will have more than 20% allocation. No single, stock will have more than 10 to 12% allocation. And this portfolio is very well diversified. And it has actually been running live on small case for last more than 2.5 years. And in those 2.5 years, it has given up to 40% CAGR, which is quite exceptional. And if we look at data for the last 10 years, you will see that the annualized return for this portfolio are almost 35%, right? The risk is slightly higher than the market, right? It is not, it is slightly higher than the market, but the drawdowns are lower because, it is very well diversified. Plus, we also use deallocation to ETFs here, right? So when there is too much high risk in the market, or when we see that the portfolio is showing a drawdown, we remove some part of the portfolio and we move to ETFs or liquid ETFs or, cash linked ETFs, which reduce your drawdown. So if you are a long-term investor who can take high risk, right? If you believe that, you want to generate long-term wealth using the market, this is an excellent opportunity for you, right? It can give you, it theoretically, based on last year data, can give you 30 to 35% CAGR, which if you can achieve that in the long term, then you can have some exceptional benefits of it, right? So momentum is an excellent strategy, if you are willing to take risk. But obviously, it will also have ups and downs. We at this point in the market, we all understand that the market will not move in a particular direction. If you are recent in the market, you've only seen bull phases, then you might have been surprised by the current market. But the market actually, this is very normal for the market to go into long-term volatile phases or into long-term bull phases. So this is, and momentum is a very tactical strategy. It is chasing trends, right? So while in the 2021 bull market, we saw that we were investing a lot into IT stocks, a lot into cyclical stocks. But when the volatility started, we switched to, steady low volatility stocks. We switched to FMCG sector. We switched to, banking sector. And now we can see a lot of, cyclical stocks, infra-linked stocks that have come up in this portfolio, which is very interesting. So, this is a quantitative portfolio that we follow where we do momentum investing. And, this is quite popular among the retail audience. We have seen more than 7,500 people actually invest in this particular portfolio on small case. So it is one of our most popular portfolios that has actually done really well. And, we have a huge conviction that this will continue to do well as the market recovers. So if somebody is asking, how does it compare to the mutual fund NAVs?
So, obviously, you can compare the CAGR in the last 2.5 years or so. It has been much better than the, mutual fund NAVs, and we think that our quantitative philosophy adds an edge. See, when a mutual fund sort of follows a particular philosophy, so you will see a momentum mutual fund also, or momentum ETF also. But when, these mutual funds are following this philosophy, they typically only, follow the momentum index published by NSE. NSE also publishes, a momentum index, a thematic index, which has momentum stocks. But, NSE has a very simple philosophy. What they do is, they're looking at 12-month return, just rating stocks based on it, picking the top, like 20, 25 stocks. But we actually try to look at momentum in various fashions, right? We are looking at previous returns, we are looking at certain technical signals, we are looking at even, what the analysts are saying. A bunch of interesting ideas are mixed together and combined to create this momentum portfolio. So it obviously has an edge. And plus, we can be very active, right? What if I see there is a reason for me to rebalance this week, I can, push a rebalance, right? We can shift our allocation. We don't need to wait for a quarter to end to rebalance, whereas all these mutual funds or index that they follow, they only stick with quarterly rebalance, and they have a limited universe also. So I think our philosophy has a lot of flexibility. The things that philosophy has a lot of edge, the number of factors that we're looking at, the number of indicators we're looking at provide an edge, and that, outperforms the market, that has outperformed the market in the last 2.5 years. Plus, if you look at, the historical performance based on the same philosophy, you can see there's a huge edge over the market based on previous 10 years of data. Now, along with this, we have a few more interesting products that I'll quickly go through, and then we'll move on to the Q&A, I think. So we have an innovation portfolio on Dhan, where, we allocate to stocks that are highly innovative, right? So these are stocks in the EV sector, these are stocks in the fintech sector, biotech sector, e-commerce, digital revolution. Obviously, you have limited number of such stocks in India. In the US market, you will see many more stocks in these emerging sectors. But in India, there are limited stocks. But we have seen very good growth pick up in these stocks also, and you can see the performance. Obviously, there's been a lot of correction because when you're looking at innovation, you will end up having a lot of IT stocks, right, or stocks linked to the IT sector, right? And obviously, IT has seen a correction for the last few months. So you can see that, because of the US market. So this portfolio has also, seen corrections in the recent time, but you compare it to small cap portfolio, obviously innovation stocks will be small caps because, a lot of the emerging companies are innovating. So it has, if you look at the long term, it has given a huge edge over the, the small cap portfolio. Obviously, the risk is slightly higher. Now, we have another interesting portfolio called the small cap portfolio. What this one does is that it does the same multi-factor philosophy, but only for smaller stocks, only for small cap stocks. And why invest in small cap stock, right? So like I said, that whenever you see there's a bull market, right? So if you look at this chart, there was a bull market in 2014 to 16 or so, 15 or so. You can see that while the market emerged, the smaller stocks outpaced it. Similarly, when the market went through this particular bull phase, you will see that smaller stocks outpaced it. And similarly, the same happened in after 2020 also. So whenever you see, because, when a stock is smaller, any money you put in will have a higher impact, right? Because its starting value is smaller, right? So we have a small cap portfolio that similarly works in the market. It has had a very good outperformance over the small cap index. It has a 37% CAGR based on 10 years data, which is amazing. Obviously, it will be, when there is a impact in the market, that will impact this portfolio. And it's not just doing trend following in small cap, but it is doing a number of other multiple quantitative philosophy it is combining to allocate to small cap. So if you think that, you are interested in investing into smaller stocks and you want to create a diversified portfolio, you want to look at stocks that have been, stocks based on a number of factors, I think it's a very interesting portfolio for you to look at. The last portfolio that I'll
talk about is the New India portfolio. This is the most recent one that we started. What we sort of anticipate in the market is that a lot of stocks that are gaining because of the government policies, right? So let's say the PLI scheme, right? In the PLI scheme, the government is incentivizing certain industries. What they're saying is that if you generate a certain amount of profit, you will save, or you will be incentivized on your taxation, etc. And that has a direct economic impact on these companies, right? So this portfolio tries to take advantage of this. And if you look at the recent performance of this portfolio, you will see that this one has done the best among our portfolios in the recent times, because the announcements that happen in the budget, right, about infrastructure spending into innovative sectors in the Indian economy linked to manufacturing, they are taking impact. Right now that the year is ending, those projects are getting cleared, and those stocks are picking up pace. So this portfolio tries to take advantage of that. And again, this is all quantitative. This is all driven by data. यहाँ पे हम data ही follow कर रहे हैं. हमने स्टॉक की यूनिवर्स है, हमने वही स्टॉक की यूनिवर्स बनाई है जहाँ पे इन सारी स्कीम से हमें फायदा मिलता है. जैसे PLI स्कीम हो गई, चाइना +1 स्कीम हो गई, या मेक इन इंडिया स्कीम हो गई. जिन स्कीम से जिन जिन स्टॉक को इन स्कीम से फायदा होता है, हमने उनकी लिस्ट बनाई है. बट इसमें पार्टिसिपेट हम हमेशा एक क्वांटिटेटिव तरीके से करते हैं. हम हमेशा देखते हैं मार्केट का रिस्क और रिटर्न, जिसको फॉलो करके ही हम इनमें एलोकेट करते हैं. तो जहां इस पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि जब बहुत रिस्क बढ़ जाता है, तो आप देखोगे कि हमारा एलोकेशन थोड़ा सेफर सेक्टर में चला गया, मे बी फार्मा में, मे बी थोड़ा FMCG में, या थोड़ा ऐसे सेक्टर में चला जाता है. और जब आप देखते हैं मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो ये इसका एलोकेशन टैक्टिकली चेंज होकर थोड़े हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स में भी चला जाता है. इसकी वाली भी सिमिलर है. इसका आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी अच्छा रहा है, और हमने जो एनालिसिस की है पिछले 10 ईयर के डेटा पे, उसके हिसाब से इसमें अराउंड 30% CAGR आना चाहिए. तो ये दिस वाज माय प्रेजेंटेशन ऑन द right portfolios. I hope I gave you a brief introduction. I hope you guys understand what we are trying to do a little bit better, and you will go back, explore some of the things that we are doing. And just because we are starting right asset portfolios on Dhan, we are offering a 50% exclusive coupon code only to the Dhan investors. So you can use right Dhan coupon code, and you can avail a 50% discount on the small cases offered by Right. And this is exclusive for the Dhan audience. And I hope you guys go back, explore, and invest in a few of these portfolios. So with that, I will hand it over to Drishti. If you have any questions, let's take those. Thank you so much, Sonam ma'am. That was a great insight about the portfolios of research. And yes, I was also going to announce the same for our Dhan users regarding the offer that we are going to have. All right. So do we have any questions, or did I cover all of those in the session? Yes, there are a few questions that are there. So what are some limitations of quantitative analysis in investing? Okay. So this is a very interesting question. See, quantitative analysis can has its limitations, right? Let's say, we are talking about a momentum factor, or we are talking about, let's say everybody starts doing momentum, right? Momentum में आप number देख के follow कर रहे हो, so the alpha will sort of dissipate, right? Because everybody is now following the same thing. Similarly, until unless you build a lot of intelligence into your particular algorithm, it can miss out on a few things. It can miss out on, let's say I am only looking at earnings, or I'm only looking at growth in earnings. I might miss out on looking at other sort of, let's say, quality metrics and stuff like that. So until unless you build up all of this into your methodology, you can miss out on a few things. So I mean, and there are chances for error, right? Like, because it's an algorithm, so you have to make sure that you're doing it well. You have to test it very rigorously. You have to go through multiple iterations of fixing it before you
go live with it. So that can be some of the challenges that quant investing can have. There is another question. Should an Mhm. investor keep few ratios or factors on his mind when he or she is observing the returns generated by the fund manager? Uh, uh, Few factors in mind. See, I like I said, we should be looking at all the. I mean, all the factors are important. Right? That's why we look at them, right? But the thing is that not all factors will work well all the time, right? One particular factor will work well in one market, and another factor will work well in another market, right? So you have to make sure that you are aware of that, right? I think that is the wisest thing to do, right? Following a momentum strategy is something that a lot of us can do, or maybe following a value strategy is that a lot of us can do. But how do you time? How do you know which strategy to prefer? That's why you sort of need to look at these factors, right? That's very true. There is another question which is there. So, how do you stay up to date with the latest developments and trends in quantitative analysis techniques and technologies? Why do you can you How do you stay up to date with all the latest developments that are happening in the quantitative analysis? And so there's so many sources of whatever is happening in the quantitative investing space. Quantitative investing is actually highly open source, right? So you will see a lot of open source content around it. A lot of there are so many publications. There's so many bloggers who write about it. There are research papers that are published on a daily basis about everything which are free to read. So I do that on sites like SSRN. There are various interesting journals and websites that I sort of follow, and that sort of keeps you up to date. You'll find I share a lot on my social media about all these methods. So you guys are please do follow me if you want to follow that along there. That was very great, insightful. There are two more questions which are there. Hmm. What are some common misconceptions that a user or people have about quantitative analysis in investing? Common misconception. So first thing I said is that people think quant investing means high frequency trading, which is not true, right? You can actually do anything quantitatively in investing, and that's called quant investing. Second is people think that quant doesn't work in India, right? I think that's something that I've heard a lot. Uh, Previously, not now, right? Now, a lot of people believe in quant, but let's say we are looking at it 5 years or 10 years ago, so nobody sort of believed that quant sort of works. But like I explained, that quant is actually a lot of these things that we understand, right? We all understand value, we all understand momentum, we all understand growth. Quant is actually following that along, and it has so many features, right, that we talked about: tactical investing, modeling regimes, and diversification, stuff like these that make give it an edge over the long term, right? So quant actually works really well in India if it is applied. Right. That was actually the right misconceptions that you gave. The last question, which is there, what advice would you give to someone who is interested in pursuing career as Hmm. in quant analysis invest? Yeah, so I would say that you should follow your passion if you're interested into it. Like how I started was, I got a start working with some people who were experts in this, but a lot of the knowledge that I've gained has come through my own personal research in this topic. Like I said, there's a lot of open source content, there's a lot of resources in the market, and a lot of data is actually free, right? You don't need to buy financial data to work on a lot of things. You find free data, a lot of free resources. So you experiment on it as much as you can. Read about quant investing, and you can then maybe pursue certain courses, pursue certain, again, you will find a lot of free resources over there also. So follow that along. If you're passionate about it, then stick with it for the long term. I think, like any investing journey, it has its ups and downs. Right? Nobody starts as an excellent investor. They have to go through, a few cycles of ups and downs for them to be good at investing. Similarly, quant investing works in a similar fashion. You have to, burn your hands, and, eventually you will succeed in this.
Thank you, so much, Sona ma'am. This was a very insightful session which we had. I'm sure all the attendees have learned something new. Mhm. I would again like to reiterate that for all the Dhan users, there is a 50% discount for right research small cases. You can avail this offer on the Dhan app, and the code would be right Dhan. And thank you so much. That was all for today. I hope everyone Thank has learned a lot. Thank you so much, Sonam ma'am, for giving your time to us. thank you. Thank you.